Hello friends, how are you? I am Satyanarayan, 2019 batch IPS, and today we are going to discuss a very important thing, and that is the syllabus of the prelims examination. So this is the first video in the syllabus series, and in the next video we will discuss about the syllabus of mains examination. So as I have already told so many times कि जो syllabus है वो एक ऐसी चीज है which we cannot ignore at any cost. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साल भर 2 साल हो जाते हैं प्रिपरेशन करते हुए बट दे नेवर ओपन द सिलेबस एंड एक बार देखते भी नहीं है कि सिलेबस में मेंशन्ड क्या क्या चीजें हैं. कोई भी एग्जाम हो, अगर हमें सिलेबस अच्छे से नहीं पता है तो जो हमारी स्टडी होगी दैट विल नॉट बी ए फोकस्ड स्टडी, और हम इधर उधर से कुछ भी पढ़ते रहेंगे एंड इन द एग्जाम दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. So it is very important so that we understand the syllabus of the prelims exam. So first of all, uh, I will discuss briefly about the process of the UPSC Civil Service Examination. So जो सबसे पहला स्टेज होता है जिसमें if you are a graduation student, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, so you can appear for this examination. आपने कोई भी फील्ड में ग्रेजुएशन की है then you become eligible, and once you have crossed the age of 21 years, अगर आपने 21 साल से ज़्यादा हो गए हैं, so you can appear for the prelims examination जो UPSC हर साल कंडक्ट करवाती है. So the prelims examination is mainly objective type. इसमें दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और दे आर ऑब्जेक्टिव टाइप. लेकिन जो मेंस का पेपर होता है दैट इज सब्जेक्टिव. ओके, सो जो मेंस के पेपर होते हैं उसमें टोटल देर आर 9 पेपर्स, आउट ऑफ विच 7 जो पेपर होते हैं उनके मार्क्स कंसिडर होते हैं, 2 पेपर्स जो होते हैं वो लैंग्वेज के होते हैं और उनके मार्क्स कंसिडर नहीं होते हैं. द नेक्स्ट थिंग, इनमें से जो 7 पेपर होते हैं उसमें से एक ऐसे का पेपर होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं यानी कि जनरल स्टडीज, एंड देन देयर इज 2 पेपर्स ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट ईच ऑफ 250 मार्क्स. सो इस तरीके से दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 1750 मार्क्स. And then the final personality test, जिसको we call in the common language as interview, so that is of around it is a process of 275 marks, and it's out of that you are judged. So अगर आप prelims clear कर लेते हैं then you can become eligible to write the mains examination. अगर आप मेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं so you become eligible for the interview, और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपके मेंस और इंटरव्यू दोनों के जो 2025 मार्क्स है उसमें से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है. ओके, सो दिस इज द बेसिक अबाउट द प्रोसेस ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, एंड नाउ वी विल डिस्कस द सिलेबस. सो ये जो सिलेबस है दिस इज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, जो रिसेंट नोटिफिकेशन है 2020 एग्जाम का जो है. So the first topic mentioned is the current events of national and international importance. So the one thing about the UPSC syllabus and particularly about the prelims is that it is very concisely mentioned, यानी कि जो है बहुत ही कम डिटेल में लिखा हुआ है. You will not find the detailed syllabus. UPSC ने ज़्यादा डिटेल्स मेंशन नहीं किया कि कहाँ से वो क्वेश्चन पूछेंगे या किस टॉपिक्स पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछेंगे. They have just mentioned the broad criterias और broad categories. So हमें जो प्रिपरेशन है उसको बहुत डाइवर्स रखना होगा. अगर हमारी प्रिपरेशन डाइवर्स नहीं होती है देन इट विल रियली बिकम अ प्रॉब्लम. सो दिस इज द करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट इंपॉर्टेंस. तो हमें खुद से ये जानना होगा कि जो कौन सी इवेंट है, यानी कि कौन सी जो करंट अफेयर्स में जो घटनाएं होती है जो करंट में, उनमें से किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. तो ये जो है इसका सोर्स मेनली आपका न्यूज़पेपर होगा. उसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो पब्लिकेशन होता है यानी कि पीआईबी, उसके अलावा जो है अगर आपको न्यूज़पेपर तो कंटिन्यूसली पढ़ना ही होगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव. बट अगर आप पीआईबी नहीं भी पढ़ते हैं डेली बेसिस पे तो भी जो उसकी जगह आप बहुत सारी कोचिंग्स के आजकल करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस आते हैं. सो आई फाउंड दैट विजन आईएएस एंड इनसाइट आईएएस देयर these compilations are very comprehensive. Okay, so you can refer to them. उनके मंथली कंपाइलेशंस आते हैं और ईयरली कंपाइलेशंस भी आते हैं. सो कीप रीडिंग द न्यूज़पेपर. उसमें से जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की इवेंट्स आती है कीप some short notes of them and then read about the monthly magazines. So that is the source for the current affairs. उसके अलावा जो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के साथ लिंक होके ही आते हैं. सो जनरली यू विल सी कि जैसे इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें स्टैटिक पार्ट बहुत कम होगा. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे. सिमिलरली जो आपका साइंस वाला जो पार्ट है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स के साथ लिंक होके आते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट.
you see how concisely UPSC has written it. It has written only history of India. It has not mentioned that it is the history of whether the ancient India or the medieval India or the modern India, or it covers the art and culture part or not. But if we see the papers, then we find that इसमें आपका एंशियंट का जो प्राचीन काल का इतिहास है वो भी पूछते हैं, मिडियवल इंडिया का हिस्ट्री भी पूछती है, एंड देन जो फ्रीडम स्ट्रगल है मेनली, या फिर जो मॉडर्न इंडिया एंड इवन जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की जो हिस्ट्री है वो सब भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेती है. सो द क्वेश्चंस आर वेरी डाइवर्स. एंड आर्ट एंड कल्चर जो है उसके कई बार 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 7 भी आ जाते हैं, कई बार 10 क्वेश्चन तक भी आए हुए हैं प्रीवियस 5 years में. So the basic source for these books is the Tamil Nadu board history, which I have already told, class 11th and 12th. Other than that, the Spectrum is a very good source for modern history, and art and culture is a very good source for art. The art and culture के लिए जो नितिन सिंघानिया की जो बुक है आर्ट एंड कल्चर, that is very important. So you can cover the history part from these 2-3 books. Okay. The next is the geography. So geography में it has mentioned the Indian and world geography. So UPSC want us to know both about the geography of India as well as about the world geography, and it has given some details like physical, social, economic geography. So what does this mean by physical, social and economic geography? He says that कि जो geography के concepts होंगे like earthquake हो गया आपका, या फिर आपकी जो plate tectonics हैं, तो जो भी कॉन्सेप्ट्स है उनको वो सोशियो और इकोनॉमिकली लिंक करेंगे कि किस तरीके से जो इवेंट्स होती है वो लोगों की सोशल जीवन पे प्रभाव डालती है, और इट इम्पैक्ट्स द सोशल एंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल. सो उसमें हम देखते हैं मेनली द रिवर्स, एग्रीकल्चर, तो ये सारी जो चीजें होती है they are part of Indian geography. like इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, how is the climate of India, what is the factors which influences the Indian monsoon, how Indian monsoon is going to affect your agriculture. So all these type of questions which are interlinked, UPSC asks them. So the basic source for them are the NCERT textbooks from class 9th to 12th of the geography. Other than that, आजकल जिस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एटलस का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज सपोज देयर इज इजराइल इन न्यूज, अगर इजराइल के साथ इंडिया की कोई ट्रीटी हुई है, या फिर कोई भी रीजन की वजह से अगर इजराइल न्यूज में है, तो यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन बना देगी कि जो इजराइल जो कंट्री है उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से पूछ लेगी, और उसमें से अगर इस तरह की ज्योग्राफी है उसकी इजराइल की, तो पूछ लेगी कि कौन कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर्स को टच करते हैं, या जो कौन सी इंपॉर्टेंट जो लाइक पीक्स या माउंटेन्स वगैरह जो हैं वो पर्टिकुलर इस कंट्री में है, या फिर जो इंपॉर्टेंट लाइक वर्ल्ड के जो माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, वो सब के बारे में जो है वो जब करंट अफेयर्स की वजह से इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ लेती है पर्टिकुलरली ज्योग्राफी में. सो जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स होती है वो कहाँ हो रही है, उसके साथ साथ कौन सी कंट्री में हो रही है और उसकी ज्योग्राफी क्या है वो हमें थोड़ी पता होनी चाहिए. एंड सिमिलरली इज द केस विद द वर्ल्ड ज्योग्राफी. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो भी वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रही होती है, लाइक साउथ चाइना सी हो गया आपका, या फिर बोलीविया है जहाँ पे आपका सिविल वॉर चल रहा था, या फिर सीरिया है जो हमेशा न्यूज में रहते हैं इंटरनेशनली. ओके. तो ये सब जो चीजें हैं इनकी जो ज्योग्राफिक लोकेशंस है वो हमें पता होनी चाहिए, और उनकी जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो भी थोड़ी पता होनी चाहिए. उसके बाद में जो है वो आपका पॉलिटी. सो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो यूपीएससी ने जो मेंशन किया सिलेबस में, इट हैज मेंशनड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स इश्यूज. इसमें से जो है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड पंचायती राज, वी कैन रीड देम फ्रॉम एनसीईआरटीज एज वेल एज इट इज गिवन वेरी ब्रॉडली इन Lakshmikant book, and particularly the constitution and political system part, like how the government functions, what are the fundamental rights, and what are the schedules of the constitution, different schedules. So these are all the details are given in the constitution, sorry, the book which is Lakshmikant's polity. But this part, public policy, every year UPSC asks around 8 to 10 questions relating to the government schemes, and this is the part विच वी नीड टू प्रिपेयर कॉम्प्रीहेंसिवली. जो भी गवर्नमेंट की नई जो स्कीम्स वगैरह होती है, या कुछ प्लान्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, एंड यहाँ से जो है वो यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है. अदर देन दैट पॉलिटी में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से भी आते हैं, और यू कैन ऑल्सो फाइंड देम इन द लक्ष्मीकांत बुक. But this is very important. Every year UPSC is asking around 20 to 25 questions from polity in the prelims out of the 100 questions. Next is the economic and the social development. So one mistake not every aspirant but many of the aspirants commits is that in this syllabus it is mentioned economic and social development. So we equate this with the economics.
सो जो आपका इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट होता है ये उसके साथ एकदम सेम पूरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। सो आपको जो है वो पूरे प्रॉपर जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो जानने की जरूरत नहीं है, अदर देन उसका जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक इन्फ्लेशन रेट्स हो गया, या फिर जो भी बाकी इकोनॉमिक के जो कॉन्सेप्ट्स है उनका जो एप्लीकेशन है, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है या फिर इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, देन व्हाट इज पॉवर्टी, हाउ द पॉवर्टी इज मेजर्ड, इंक्लूजन में आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक्स लाइक लिटरेसी रेट्स और whatever other demographics like questions related to population density, social sector initiatives, again health, education, these are the important social sectors and government की कौन कौन सी schemes है या programs है, UPSC asks questions about them। so यहाँ पे जो है वो हमें economics जो pure economics होती है like micro economics which we call, वो नहीं पढ़ने की जरूरत है, we just to know the basics of the economics and then their applications। most of the questions are current affairs oriented, okay, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है तो यूपीएससी पूछ लेती है, या फिर और कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लेके आ गए ब्लैक मनी को चैलेंज करने के लिए या ब्लैक मनी को टैकल करने के लिए, अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम है या फिर और भी कुछ भी गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स होते हैं इकोनॉमी को लेकर, उसके क्वेश्चंस यहाँ पे मेनली यूपीएससी आस्क्स। सो वी कैन कवर द बेसिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज द बुक जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा। सो बोथ दीज आर कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स। उसके अलावा वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन करंट अफेयर्स बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड करंट अफेयर्स के जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। The next very important portion is the general issues on environmental ecology, biodiversity and climate change. So these are the three broad areas: environment ecology, biodiversity and climate change. So यहाँ पे भी जो questions है either they are conceptual in nature like ecology क्या होता है, इकोटॉन्स क्या होते हैं, निशे क्या होता है, या जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इकोलॉजी के। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी में मेनली जो आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं या फिर कहाँ कौन से नेशनल पार्क्स वगैरह हैं और कहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है, कौन सी स्पीसीज कहाँ की फेमस है या पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वो कहाँ की एंडेमिक है, यानी वेयर दे आर फाउंड पर्टिकुलरली। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द बायोडाइवर्सिटी सेक्शन एंड इन क्लाइमेट चेंज सेक्शन जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इवेंट्स होती है या क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो समिट्स वगैरह होती है उन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन सी गैसेज होती हैं जो क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट डाल रही है। सो वी कैन कवर दीज टॉपिक्स कॉम्प्रिहेंसिवली फ्रॉम दिस सिंगल बुक दैट इज शंकर IAS एनवायरमेंट। द नेम ऑफ द बुक इज एनवायरमेंट शंकर IAS। ओके, सो दिस इज इजीली अवेलेबल ऑन द these e-market platforms and we should go for this book। and the next is the general science। okay, so general science में generally if we read from 6 to 10 science books that will give us the basics of science and then we have to keep a watch on the current affairs related to science। जो भी साइंस में बड़े डेवलपमेंट्स वगैरह होते हैं जो इंडिया की एजेंसीज है लाइक इसरो, DRDO, ये सब जो कुछ बड़े प्रोग्राम्स वगैरह जो इनके होते रहते हैं, इसरो के सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, लॉन्च होते रहते हैं, या फिर जो कोई थियोरीज होती है जो न्यूज़ में होती है, बिकॉज लाइक इन 2017 दे आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट आइंस्टीन। सो ये जो क्वेश्चन था आइंस्टीन की जो थ्योरी थी रिलेटिविटी उसको 100 साल हुए थे, 1917 और 1918 के आसपास जो है आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। तो उसके बाद में लगभग 100 साल बाद में यूपीएससी आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो इस तरीके से जो करंट अफेयर्स के साथ जो साइंस लिंक होती है दोज क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय यूपीएससी इन डिटेल। ओके, सो दिस इज द बेसिक सिलेबस and this paper is of 200 marks and every year जो cutoff है that varies but it remains within 100 marks to some 115 marks, उससे ज़्यादा vary नहीं करता है। so you have to score at least 120 marks in order to get a short selection in prelims, so you can become eligible to write the mains। so this is the paper 1 which is general studies paper of the prelims and the paper is the CSET paper, that is your aptitude test। and in this paper it is a qualifying paper, it is of 200 marks and out of that you have to score at least 66 and I think 2-3 marks or I think 67 marks because the UPSC says that you have to score 33% marks, so I think it comes to 66, not 66 2 and 3, it is just 66 marks, so you have to score just 33 marks or 1/3 marks। so for that the syllabus which UPSC mentions is comprehension,
that is like your reading abilities and your comprehensive abilities कि आप जो पैराग्राफ वगैरह वो पढ़ के हैं उससे आंसर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं. Then your interpersonal skills including communication skills, then your logical reasoning and analytical abilities which we read in the, like आपका mathematics हो गया या फिर जो logical reasoning है. So the students who are preparing for banking exams or SSC CGL, they are very conversant with these type of concepts, or the persons who are from the science background or engineering background, they just need to go about the last 5-6 year papers. This subject was introduced in the UPSC in around the year 2013. So 2013 के बाद में जितने भी papers हुए हैं UPSC के CSET के, you just go through all of them and then you will realize that कि जो questions होते हैं वो बहुत मुश्किल नहीं आते हैं, लेकिन बस you have to manage your time. In the limited time you have to attempt maximum number of questions so that you can get qualified, and you just have to get qualified. And then sometimes they ask questions related to decision making and problem solving, but generally इससे questions नहीं पूछते हैं. Then they ask question from this general mental ability and the basic numeracy. सबसे ज़्यादा जो question होते हैं वो यहाँ से आते हैं और comprehension वाले part से आते हैं. Like they will give you a paragraph and they will ask you that what is the most logical inference from this paragraph, or what the author has based this paragraph on which theme, or they will directly ask questions related to the theme of the paragraph. जो भी paragraph में दिया हुआ होगा या passage में दिया हुआ होगा, they will ask you questions directly which is mentioned there. So you have to use your brain कि कौन सी चीज जो मोस्ट लॉजिकल है या मोस्ट सूटेबल है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन दिस पेपर. बेसिक न्यूमरेसी में इफ यू नो द मैथ्स ऑफ क्लास अप टू 10, जो भी हम क्लास 10 तक की जो मैथ्स पढ़ते हैं लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स एंड जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, सो इफ वी नो द 10th क्लास का मैथमेटिक्स, देन यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस. The problems related to trains or the time limit and that tank filling problem. So these type of questions are asked in the CSET paper. It is a very easy paper. The only thing is that you do not have to ignore this paper while going before the exam. You just look at the papers which has been UPSC conducted 2013 to 2019. So जो भी questions UPSC ने 2013 से 2019 में papers पूछे हैं, you just solve all of them and just see that whether you are able to score 33% marks or not. If not, then you need to buy particular books. जो भी बहुत सारे publications की book available है CSET के paper के लिए, so you can order any particular book. But if you are comfortably scoring around 100 marks in all of these papers, then you need not to particularly इस पेपर की तैयारी करने की जरूरत नहीं है. Whatever the basic knowledge you have in your mathematics, in your reasoning, or if you have been preparing for any other exam like SSC CGL, then you can easily solve these questions. So this is what about the paper 1 and paper 2 of the prelims examination. Now I want you people to rate this video on a scale of 5. आपको कैसा लगा ये video? How did you find the content of the video? How did you find the presentation? Whether you were able to understand what I was trying to explain, and then on the basis of those criteria you can rate it the video from scale of 1 to 5. अगर आपको बहुत ही खराब लगा, so you can write it in the comment section that this video is not so much useful, and you can write 1. If you find that it is very useful, then you can write 5. Otherwise you can give a rating between 2, 3 and 4. Okay, so I request you people to like this video, share it with your friends who are preparing for UPSC or had started preparing for UPSC or wants to start for the preparation of UPSC. And then all the people, I request you to subscribe to the channel so that we can grow more and more and we can reach to the more and more number of people. Thank you. Have a nice day.